Okay, good evening, everyone. I hope I'm properly audible and visible to each one of you. So let's just so welcome to the latest part, or rather the latest segment of the question hour, which is about the code of civil procedure. Now, understand this, dear aspirants, dear students, कि code of civil procedure जरूरी है, obviously जरूरी है, backbone है civil civil law की, civil judicature की. Fine. And we'll be having this quiz, which will be based on that entire area of CPC. Fine. So, uske kuch questions honge, kuch fun hoga. I'm just waiting for a few more people so that we can start with the quiz. Fine. Just waiting for a few more people to join. Also, dear students, if you haven't yet enrolled for the Judiciary Championship, do enroll for it. Fine, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ऑल्सो आप लोग अगर अभी अभी आए हैं तो गो टू द मेंटी मीटर. फाइन, रादर द मेंटी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी आपके इस वीडियो के, और वहां से आप डायरेक्टली मेंटी पे जाएंगे. वहां पे अपना पूरा नाम डालिएगा. प्लीज अपना आधा नाम मत डालिए, वरना जो भी विनिंग अमाउंट होगा वो हम आपको ना दे पाएंगे. ठीक है? सो मेक श्योर कि आप अपना पूरा नाम रखें. फाइन, सो दैट यहाँ पे हमारे लिए ईज हो जाए कि हम विनर को बेस्ट अमाउंट दे दें. अच्छा, बेस्ट अमाउंट बोल रहा हूँ, आई मीन द विनिंग अमाउंट दे दे. ऑल्सो मेक श्योर कि ये अब कुछ आखिरी पल हैं, आखिरी पल एज इन आखिरी कुछ दिन हैं क्विजेस के, जहां पे आज सीपीसी है, कल आपका फैमिली लॉ और टॉट है, एंड परसों कॉन्ट्रैक्ट्स का क्विज होगा. तो जो लोग अभी तक लीडर बोर्ड में अपनी जगह बहुत सॉलिड करके बैठे हुए हैं, दिस इज द हाई टाइम गाइज. मेक श्योर करो कि वो जो अल्टीमेट चैंपियन होगा द क्वेश्चन आर का, उसके लिए भाई बहुत अच्छा प्राइज है. बाकी सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राइज है. इनफैक्ट जितने भी लोग इस क्वेश्चन आर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबके लिए ये अवार्ड से तो कम नहीं है यार. बिकॉज दिस इज फन, दिस इज मस्ती, बट दिस इज कोर लर्निंग, एंड दैट इज द की ऑफ जुडिशरी प्रिपरेशन. फाइन. So we have got quite a few people now. 38. Okay. Let's see number थोड़ा सा और बढ़ जाए. Fine. And then we can start. फटाफट से शुरू करते हैं. आई होप आप लोगों ने एनरोल कर लिया है. फाइन. तो सीपीसी कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट्स, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि जिस भी जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे पर्सनल इंटरव्यू हो, तीनों ही स्टेजेस पे सीपीसी एंड सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. फाइन. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम, अभी तक मैंने, आई एम श्योर मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है. सो विदाउट taking any more time, let's just get started with our quiz. Fine, देख लेते हैं. टोटल वैसे तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा और जुड़ जाए तो हम शुरू करें. फाइन. Let's see. I'll just wait for one more minute and then we'll begin, guys. Fine, just one more minute and then let's say go. Okay, so we have got 45 people here. Fine. ठीक. सब अपनी अपनी ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज कराने के लिए आ चुके हैं. So 46 people here. Let's just wait for 30 more seconds. 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं and then we'll begin. Fine. Okay. Pardon pardon for my voice. थोड़ा सा आज इनफैक्ट कल से थोड़ी हेल्थ मेरी डाउन है, but I'm sure the experience is going to be as high as possible. Fine. So, okay. Let's see if we can start this. Fine. Okay. So we have 49 people. We are good to go. Let's get started. Fine. 50th aspirant, 50th student जुड़ जाएंगे बाद में, बट शायद बहुत देर ना हो जाए. ठीक. चलिए, let's get started with our first question. Brace yourself, guys. Winter is coming. Okay, we have got 50 and 49. कम ज्यादा होता रहेगा. Let's get started. अपनी नजर मेंटी पे. Focus. Start. Be very quick.
Be very keen, be patient, but quick. Judgment under section 29 means, simple question. Fine. इतने सारे मेंटी क्विजेस हो चुके हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलत आंसर मार्क ना करे. लेट्स सी दैट इज गोइंग टू हैपन. Okay, so we can see statement of grounds of an order or decree. So what basically a judgment under section 29 is? It is a statement of grounds कि कोई डिक्री या ऑर्डर क्यों पास किया गया है, उसका रीजन. फाइन, उसके ग्राउंड्स क्या है ये डिस्कस किया जाता है जजमेंट में एज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 29. Let's have a look at the first leaderboard of today's quiz. Fine. Let's see who's leading. Okay, I can see Hitesh's name at the very top. Fine. He was the fastest. Well done, Hitesh. Hitesh, Indu, and Deepesh, and then Hani, Isha, Prakashri, Aditi, Sagar, Bhumika, Pooja. Fine. This is the first leaderboard. Let's move towards the next question. चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने. A dies leaving behind a son X and a married daughter Y. A suit filed by A after his death can be continued by. Fine. This calls for quick judgments. That's what is important. Okay. So there were mixed answers 12, 9, 2, fine, around 23 odd answers were wrong. But X and Y, both of the legal representatives, the son and the daughter, they can continue with that particular suit. Fine, as legal representatives of A. Fine. Let's have a look at the leaderboard. Let's ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश तो नहीं लग रही बट वी डोंट नो. ओके सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू न्यू नेम्स हियर. So Indu was the fastest here, and I believe शायद हितेश का आंसर गलत हो गया जिससे थोड़ा हवाओं में परिवर्तन हुआ है. आशुतोष, चारू, they are new entry. Manas is a new entry. That's really good, guys. Fine. Let's move towards the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Question number 3 of 25. Okay. Words competent jurisdiction under section 39 of CPC refers to very important section, frequently asked, not just for preliminary examination, but for mains examinations as well. In fact, personal interview में भी इस specific section, section 39 से related काफी सारे questions पूछे जाते हैं. Fine. So yes, pecuniary and territorial jurisdiction of the transferee. Lots of wrong answers I'm seeing here. थोड़ा सा लगता है आज प्रिपरेशन कुछ कम ज्यादा हुआ है तभी इतने wrong answers हो रहे हैं. या शायद सीपीसी हमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट माइंडेड डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन गेट यू इन द मेरिट लिस्ट. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीसी एंड सीआरपीसी. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ. लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं. फाइन. So Dipesh का ये आंसर गलत हो गया. And I believe there is gonna be change. Yes, Hani was the fastest to answer this. Indu second पे है. ईशा, सागर, आकाश, भूमिका, चारू, आशुतोष. फाइन, सब लोग गेम में बने हुए हैं. हितेश इज बैक. दीपेश 10th पोजीशन पे चले गए बट who knows. Fine, we have got lots of questions left. Let's move towards the next question. Question number 4 of 25. Be very keen and accurate. The case of PC Jairath versus Amrit Jairath deals with which particular concept? Whether it deals with section 10, section 11, stay of suit, or res judicata, supplemental proceedings, it deals with what? Fine. Okay. Let's see. Time's up. Everybody did not vote. So basically, PC Jairath versus Amrit Jairath deals with section 10. Fine. That is something that you need to remember. यहाँ पे काफी आंसर्स गड़बड़ा गए बट सेक्शन 10 स्टे ऑन सूट जिसे हम प्यार से रेस सब्जुडाइज भी कहते हैं उससे डील करता है पीसी जयरथ वर्सेस अमृत जयरथ का केस. फाइन. ब्रॉडली. सो only 8 correct answers. There's gonna be change. There's definitely gonna be change in the leaderboard now. Let's have a look. Okay, only Deepesh, Manas, and Rahul answered this correctly. And will there be a change? Yes, obviously. So Deepesh again back in top three, fastest. Charu थोड़ा सा पीछे सरक गए हैं. Rahul is a new entry. Bhumika and Akash, they are playing well.
मानस, सागर, बकअप गाइस, फाइन। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 25। ये थोड़ा हैवी होते हैं, क्वेश्चन सीपीसी के हैवी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्जिम्स डज नॉट डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा? कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्टेट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू मैग्जिम्स। फिर चाहे वो किसी भी लॉ से रिलेटेड हो, मैग्जिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत क्रूशल होते हैं वंस दे आर आस्क्ड। फाइन। As expected, the answer is nemo that quod non habet, which basically means no person can transfer a better title than he himself has. Corely, it deals with civil law via Indian Contracts Act and Transfer of Property Act. फाइन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी स्पेसिफिकली हम देखते हैं इसको सेक्शन 41 सेक्शन 43 के अराउंड। एंड इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन एज वी कैन सी ऑन द रिस्पॉन्सेज। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ। फाइन। क्या कोई परिवर्तन, कोई चेंज आएगा? ओ माय गॉड, टू टॉप स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई जहां पे आंसर गड़बड़ा गया। अरे बेचारे, आखिरी चले गए। एंड हितेश वाज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस। दीपेश, कंसिस्टेंसी इज द की, वेल डन। ईशा, मानस, वेरी गुड गाइस। आकाश, चारू, बहुत मौका है, बहुत चांस है। आशुतोष भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 ऑफ 25। लेट्स सी। The provision for substituted service of summons on the defendants has been made under. Fine. Now, this is an index based question, but not just index based question, it is also dependent on whether you read the orders of CPC thoroughly or not. Let's see. So it was Order 5, Rule 20. It was an easy question. Directly जब भी हम index based question आपकी तरफ throw करते हैं, it's something that you should not, आई मीन, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज समथिंग। क्योंकि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन जुडिशरी प्रिपरेशन का नींव होता है। वी इन जुडिशरी गोल्ड वी रिकमेंड स्टूडेंट्स कि वो अपनी बैराक की पहले तो इंडेक्स की एक फोटो कॉपी करा के रख लें, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन memorizing, and not just memorizing but structuring the entire code or the statute that whatever they are studying. Fine. 26 correct answers, not much of a change expected until and unless there are wrong answers. ओ गॉड, सेकेंड नंबर पे आए ईशा का आंसर यहाँ पे गलत हो गया। सो डेफिनेटली देयर इज गोना बी चेंज। यस, हितेश वाज फास्टेस्ट अगेन एंड उनकी पोजीशन नंबर 6th 7th आ चुकी है। फाइन। ईशा सेकंड पोजीशन पे थे, लास्ट पोजीशन पे चले गए। आकाश इज प्लेइंग रियली वेरी वेल। दीपेश, मानस, चारू, आशुतोष, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 of 25. Very important that you read the things very carefully. Order 6, Rule 16. This is a question which everybody should answer actually. यहाँ पे everybody should be voting. Fine. This is an easy question. It is unnecessary, scandalous, it has to be prejudice, embarrassing, and other such stuffs, all of the above. Fine. Order 6, Rule 16. That is important for dismissal or rather striking out of a pleading. Let's move towards the leaderboard. Let's have a look at the leaderboard. सो ओनली भूमिका, ओ माय गॉड, भूमिका का आंसर गलत हो गया। लीडर बोर्ड से कहीं बाहर ना जाए भूमिका। फाइन। ओ, ऑन द 10th पोजीशन हितेश वाज अगेन द फास्टेस्ट, ऊपर आ गए हैं पोजीशन में। वी हैव गॉट अ न्यू एंट्री, इति इज देयर, अदिति वापस आ गए हैं, दैट्स रियली गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 of 25। लेट्स सी। Summons to the defendant is returned unserved and plaintiff fails to apply for issuance of fresh summons within 7 days of return. Suit is liable to be. Fine. Now, these are very, very basic details जिनसे related questions बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं. Fine. Let's see. Let's see. Oh my God. 10, 13, 12. But the right answer is Order 9, Rule 5. Okay. So obviously we are now expecting some change in the leaderboard now. Let's have a look. परिवर्तन, जी, भारी परिवर्तन, काफी गुंजाइश है। सागर वापस आ चुके हैं एंड आशुतोष हैज जंप टू सेकंड पोजीशन। फाइन।
आशुतोष, चारू, आकाश, काफी क्लोज नेक टू नेक कंपटीशन है, इवन इति एंड आदिति. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ चेंज होता है. फाइन. You guys are doing really very well, guys. Really very well. According to Section 27 of CPC, summons to the defendant to be served on such date not beyond how many days. Now this is an easy question. Isme I expect you guys to mark all the answers correct. Will everybody vote? Oh my God, only 40 votes. Not all the votes. Let's see. But yeah, 30 days. So this was perhaps one of the easiest questions जो आज पूछा गया है. लीडर बोर्ड में ज्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं है until and unless there is some major mistake. As expected, there is no mistake. You guys have played well. Fine. Well done, guys. Hitesh was the fastest. Sagar ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. Sagar is now at ninth position. Isha थोड़े से नीचे सरक गए. Let's move towards the next question. Question number 10 of 25. Sorry. In Section 47, all questions arising between the parties to the suit relating to execution, discharge, or satisfaction of the decree have to be decided. Fine. When it is 47, you know कि वो पूरी line 39 के बाद से चल रही है. That means we are talking about the executing court. So 28 answers are correct. Let's have a look at the leaderboard now. Will there be any change? Not really, but yeah, Ashutosh answered this pretty quick. In fact, Hitesh answered this very quick, but Aditi was the fastest and well-deserved jump to fourth position. Let's move towards the next question. अगले question की तरफ चलते हैं. Question number 11 of 25. Okay, guys. Let's see. Which of the following properties cannot be attached in execution of a decree? Fine. ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज आस्क्ड एवरी टाइम सो यू कैन नॉट मिस दिस सेक्शन नंबर 60 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. हर बार एक ना एक जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइन. रिगार्डलेस ऑफ द जोन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन 60 हर बार कहीं ना कहीं एक से ज्यादा स्टेट्स में भी पूछा जाता है. So this is very important. So as you can see, promissory note, the pro notes or the house or other building or hundis, इसके बारे में specifically section ही बात कर रहा है. उसके subsections या clauses में जाने की जरूरत नहीं है. But हमें clauses से पता चल जाता है कि books of accounts cannot be attached. Let's have a look at the leaderboard now. यहाँ पे चेंज की गुंजाइश कम है. ओके, चारू एंड मानस का आंसर गलत हो गया है, तो चेंज इज इनएविटेबल. फाइन. सागर was the fastest to answer this. Deepesh, as we can see, is at a comfortable lead, but Ashutosh is playing really very well. मतलब he's answering really very well. Fine, then Akash, then Iti, and Aditi थोड़ा सा नीचे सरक गए. Let's move towards the next question, guys. Fine. Be very quick. Question number 12 of 25. Let's see, can we get which of the following must be stated in the pleadings? Let's see if we can get 100% voting on any answer. प्लीडिंग की बात की गई है. प्लीडिंग में क्या आता है? फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोबेंशिया, फैक्टा what? Fine. So the answer is facta probanda. Let's move towards the leaderboard now. Relevant fact or okay, so four wrong answers. Let's move towards okay. So the leaderboard states कि आकाश थोड़ा सा नीचे चले गए हैं. नीचे क्या चले गए? सेकंड पोजीशन पे ही हैं, बट पॉइंट्स थोड़े गड़बड़ा गए. देन वी हैव गॉट अदिति, देन आशुतोष, देन सागर, देन चारू, देन ईशा, इति, हितेश, लास्ट में मानस. Let's move towards the next question. Be very keen and quick, guys. This is very, very important. Issue means this is a simple question. Fine, look at your phone, look at your phone. Let's see. This is though an easy question. यहाँ पे गलती की ज्यादा गुंजाइश नहीं है. Yeah, 27 answers. Rival contentions of the parties based on their pleadings. Now, the point that you need to remember is
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आता है जजमेंट राइटिंग में फॉर क्रिमिनल जजमेंट्स एंड फ्रेमिंग ऑफ इशू इज फॉर द सिविल जजमेंट्स. So while you are writing a civil judgment, you have to frame issues. So while creating framing of issues, you'll have to look at both the pleadings, fine, the plaint as well as the written statement, and on the basis of the uh, basic calculation, you'll have to understand that what are the points wherein जहाँ पे दोनों pleadings के बीच में यानी plaint और written statement के बीच में कहाँ पे एक rival situation create हो रहा है, कहाँ पे एक dispute create हो रहा है, और उसके basis पे आप create करते हैं issues. Fine. Let's have a look at the leaderboard now. The question was easy, so I'm not expecting much change in the leaderboard. Oh, okay, but Aditi का ये शायद आंसर गलत हो गया. Shubhi is a new entry in the leaderboard. Aditi थोड़ा नीचे चले गए हैं. आशुतोष is back in the game, थर्ड पोजीशन पे है. दीपेश की जो लीड है वो कंफर्टेबल लीड है, बट who knows, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ईशा was the fastest. Let's move towards the next question. Question number 14 of 25. चलिए, let's see. Contentions arising out of plaint only be okay. Arising out of written statement only, rival contentions of the parties based on their pleading. Fine. Void. Void with the permission of the court. Valid, or either valid or voidable. Fine. Okay. So contentions arising out of plaint only and contentions arising out of written statement only are rival contentions of the parties based on their pleading. Void. Let's see. Only three answers were correct. There was some issue maybe with the question. Let's, as as it can be expected, Isha has got some benefit of it. She was the fastest, and now she's at second position. I believe there was some error with the question. Let's move towards the next question now. Question number 15 of 25. अगले question पे चलते हैं. Rejection of an application for permission to sue as a pauper. Fine. This is an important question, guys. This is an important question. Bars a fresh application on the same cause of action, does not bar a fresh application on small cause, does not bar a fresh application at all. Okay, so quite a few wrong answers. 13 to 8, but yeah, 16 correct answers. Majority is with us. Let's let's have a look at the leaderboard now. क्या leaderboard में कोई बदलाव, कोई change की गुंजाइश? ओके, ईशा, आकाश, अदिति, पांच लोगों का आंसर यहाँ पे गड़बड़ आ गया. एंड there's a definite change in the leaderboard. Yes, Ashutosh is at second position now. Sagar was the fastest. Remember, Sagar शुरू से intact रहे हैं and थोड़ा सा बाहर भी गए leaderboard के, but फिर से अंदर आ गए. So आकाश थोड़ा सा नीचे सरक गए, but we have got lots of questions. Let's move towards the leaderboard. Let's move towards the next question. Question number 16 of 25. Look at your phone, guys. Look at your phone. Fine. Let's see. Court fee on a plane can be permitted to be paid on a subsequent date. When or under which section? इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. फाइन. क्वेश्चन का आंसरिंग इतना स्लो होने की चांसेस कम ही होती है अगर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपने प्रिपेयर ढंग से किया है. सो द राइट आंसर इज सेक्शन 149. फाइन. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ. लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं. Will we see? Yes, we are definitely witnessing some good change. Okay, so let's see. Akash was the fastest. Now he's at third position. Sagar second position पे आ गए हैं. Deepesh is at a comfortable lead. We have got we've got quite a few good students here now. Fine. In fact, all of you are good students. जो भी इस quiz में participate कर रहे हैं. Just you'll have to work hard. Who amongst the following is not a public officer within the meaning of section 217 of CPC? Within the meaning of section 217 CPC. Remember this. Fine. That is the point that you need to take care of. As per section 217. So yes, 34 correct answers. Sarpanch of a Gram Panchayat. Well done, guys. Well done. Let's have a look at the leaderboard. So yeah, not many wrong answers. Ashutosh का आंसर यहाँ पे गलत हुआ है. But Hani is back in the leaderboard. And Ashutosh थोड़ा फिर से नीचे सरक गए. But Deepesh this time was the fastest. Let's move towards the next question. अगले question की तरफ चलते हैं. Question number 18 of 25.
Look at your phones. Section 15 of CPC lays down. What is the nature of Section 15 that has been asked in this question? Let's see. Okay, will we get everybody has voted? Okay, not this time. It is a rule of procedure. It is not a rule of jurisdiction. It tells you more about the rule of procedure. Fine. Let's have a look at the leaderboard now. Only eight correct answers. Change का भारी गुंजाइश है. Fine. As we can see, Deepesh, Akash, Ashutosh, iti सिर्फ चार correct answers. The question has, fine. The question has served its purpose. Let's move towards the next question. अगले question की तरफ चलते हैं. Remember guys, these are the last seven questions. Very very important for you. पूरा game इन questions पे टिका हुआ है. पूरा fun भी. A judgment passed by a court can be reviewed by the court passing the judgment, by executing court, by high court or by supreme court. This is a simple question. This is a very simple question. Okay. So thank God nobody marked by the Supreme Court, क्योंकि अगर आप सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां वो लैंग्वेज ही हाई कोर्ट से स्टार्ट होती है. फाइन. लेट्स हैव अ लुक. Let's have a look at the leaderboard. Fine. Not much of a change in the leaderboard, but Sagar was the fastest to answer this question. Let's move towards the next question. Last six questions, guys. A lot to learn from this. Make sure कि आप क्विक आंसर्स दें क्योंकि अब गेम पलटता है. अब एक्चुअल लर्निंग सीन में आती है कि आप कितने क्विक हैं. फाइन. आंसर फास्ट टू गो टू गेट मोर पॉइंट्स. Issues can be altered. Can issues be altered? That is the question. Or if it can be, then when can it be or under what provision can it be? Let's see. ध्यान से पढ़िएगा. ऑर्डर्स रोमन में है, जाहिर है, तो गड़बड़ की गुंजाइश ज्यादा है. ओके. एज वी कैन सी, ऑर्डर 14 रूल 5 दैट इज इंपॉर्टेंट. फाइन. जो अमेंडमेंट होते हैं या जो ऑल्टरेशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर इशू में, fine, that is done by virtue of order 14 rule 5 of CPC. Let's move towards the leaderboard. Will there be change? Yes, there has to be change. Change is inevitable. It's like Thanos here. Fine. So Deepesh was the fastest. Deepesh ने काफी अच्छी खासी कंफर्टेबल लीड बना ली है. फाइन. आज दीपेश नाम रोशन कर रहे हैं खुद का. एंड आकाश, सागर, आशुतोष थोड़ा सा पीछे रह गए, बट या देयर इज स्टिल गेम ऑन. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बी वेरी क्विक एंड कीन गाइज. वेरी क्विक एंड कीन. दैट इज द फन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Section 56 of CPC prohibits arrest and detention in execution of a decree of a minor boy, a minor girl, a woman, a person of unsound mind. Now the point is, यहाँ पे जो आंसरिंग होती है वो बहुत क्विक होती है, या फिर अगर नहीं होती है तो वो रुक जाती है. द पॉइंट इज यू नीड टू रिमेंबर कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि बाकी ऑप्शंस ऑब्वियसली करेक्ट है, बट अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन हमें पूछा जा रहा है तो उस प्रोविजन के हिसाब से लॉ का क्या एप्लीकेशन है या लॉ का क्या प्रोसीजर बताया गया है, उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट अ वुमन एंड उनका अरेस्ट डिटेंशन नहीं हो सकता. दैट्स व्हाट इज सेड अंडर सेक्शन 56. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार, इनफैक्ट सारी जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने क्वेश्चन आर में फेस किए हैं, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन. फाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अच्छा, उससे पहले लीडर बोर्ड. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. किसी ने भी लीडर बोर्ड में कोई गड़बड़ नहीं की. Henny was the fastest to answer this. Let's move towards the next question.
Question number 22 of 25. Look at your phones. In which of the cases was the validity of Section 51 was adjudged? Fine. Very famous case. मतलब in fact ये सारे cases famous हैं, but specifically अगर हम बात करें तो Section 51 की validity कौन से केस में जज की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? Everyone has voted. Finally, there is a question where everyone has voted, but majority of the answers are wrong. The answer is Jolly George Verghese versus Bank of Cochin, जिसमें डिसाइड की गई थी सेक्शन 51 की वैलिडिटी. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट केस है, वैसे तो बाकी तीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, but Shiv Prasad Singh versus Ramanandan is an important case when you talk about the concept of res sub judice and res judicata. Fine, this is pretty much important. Let's move towards द लीडर बोर्ड नाउ. अब यहाँ पे तो काफी गुंजाइश है भाई साहब. दीपेश का आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दीपेश का आंसर यहाँ पे गलत हुआ है, बट एज वी कैन एक्सपेक्ट कंफर्टेबल लीड. आकाश वॉज द फास्टेस्ट टू आंसर दिस. चारू ने बहुत अच्छी खासी जंप लगाई है. दैट्स वेरी गुड चारू. सागर, आशुतोष, इति, ईशा, अदिति, Rahul and Manas. Buck up, guys. Buck up. There are questions left. Let's see. Let's have a look at the last third question. The case of Manohar Lal versus Seth Hira Lal deals with. Now, there's a purpose obviously for this question, but this is an easy case. ये वाला जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोसीजरल लॉज में हमें केसेस कम देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है. केसेस हैं एंड इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हमें स्टडी करना जरूरी है. Oh my God. Miss Joiner and non-joiner. 18 incorrect answers. So remember this, guys. Manohar Lal का जो famous case है that deals with the inherent powers under the CPC. So it is very important that you study cases as well. मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग जितने भी case related questions आते हैं उसमें आपको दिक्कतें हो रही हैं. So this is the best way to judge कि हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ें, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी देखें, लेकिन उनसे रिलेटेड केस लॉज को भी स्टडी करें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Obviously, we can expect change in the leaderboard now. There is going to be change in the leaderboard. Yes, as expected, three wrong answers, but quite a few fast answers. Manas was the fastest, and he has jumped to the 8th position. Rahul ने भी अच्छी खासी जंप लगाई है. दीपेश, आकाश, चारू स्टिल इंटैक्ट, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सागर एंड आशुतोष से. ठीक. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. लेट्स सी how do we answer this, how do we face this. Madan Lal versus another case law based question. Madan Lal versus Balkrishna case is a landmark judgment of which section? फाइन. स्पेसिफिकली कौन से सेक्शन से डील करता है मदन लाल वर्सेस बालकृष्ण केस? This is very important, guys, and it is a very famous case when you study it from Takwani or from any of the books that you refer. Oh, okay. So 15 answers, yes, correct, very well done. It deals with second appeal as has been provided in section 100. फाइन. रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन नहीं, इनसे डील नहीं करता है मदन लाल वर्सेस बालकृष्ण. ध्यान रखिएगा. डू शेयर दीज वीडियोज ऑफ क्वेश्चन आर विद योर लॉ स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड अदर सच जुडिशरी एस्पिरेंट फ्रेंड्स, कॉज उनका भी अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो से. फाइन. इनफैक्ट जितने भी वीडियोस आपके क्वेश्चन आर के हैं सभी शेयर कीजिए. सारे ही वीडियोस आप जुडिशरी गोल्ड के शेयर कीजिए, क्योंकि we come up with lots and lots of quizzes, we come up with lots and lots of explained in short formulas and other such how-to videos. So that is going to be really very helpful for you in your preparation. Let's move towards the leaderboard. Let's see, will there be a change in the leaderboard? I'm expecting not much of a change. ईमानदारी से, yes, as expected. But चारू का आंसर यहाँ पे गलत हो गया. How much is this going to cost? ओके, सो सागर की इतनी जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई है. सागर इज एट थर्ड पोजीशन. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 600 पॉइंट्स का डिफरेंस है. क्या लास्ट क्वेश्चन से कोई फर्क पड़ेगा? दीपेश एंड आकाश, कंफर्टेबल पोजीशन. वेल डन, गाइस. लेट्स मूव टुवर्ड्स, एंड भूमिका वाज द फास्टेस्ट. Let's move towards the last question of the day. Let's see. Under section 115 of CPC, the revisional jurisdiction is with. Fine. Okay, so I was talking about. Okay, I'm not gonna reveal this because previously a question में
मैंने आपको एक आंसर दे दिया था, बट आई बिलीव आई एम नॉट श्योर इफ यू guys remember this. Okay, you guys don't remember this. Thankfully, the answer is the High Court. And ये मैं पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ. फाइन, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं. बट 20 आंसर्स आर करेक्ट. मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. सो यस, 115 सीपीसी जो बात करता है आपके रिविजनल jurisdiction की, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115. Revisional power is with the High Court under section 115 of CPC. Will there be a change in the leaderboard? Will there be a change in the top, second, and third position? Let's see. And we know the winner, but let's see. Will there be a change? Okay, so not much of a change expected. Fine. Okay. Okay. So Deepesh, congratulations. Well done. शुरू से आपने अच्छी खासी कंफर्टेबल लीड बना के रखी थी. यू मेड श्योर कि ज्यादा गलतियां ना हो. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन. Well done. Well done. So, Dipesh, Akash, and Sagar, just send your details to accounts@legaledge.in. अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने भी ये क्वेश्चन आर अटेंड किया या जो भी अभी तक क्वेश्चन आर अटेंड कर रहे हैं, फाइन. If you like this question hour, then do like this video, do share it with all your judiciary aspirant friends, and let's meet tomorrow in the next quiz. Tomorrow we'll be having the quiz on family law and torts, which will be taken by Arjita ma'am, and then on the finale we'll have the this particular quiz on law of contracts, which will be taken by me. So hasta la vista, good night, tata, bye bye, take care, bela ciao and jai Hind. Bye bye.